So last time we have finished on the humerus bone. So first, then now we start the radius. First we add some details on humerus also. देखिए 2-3 पॉइंट्स ऐड कर लीजिए. Anterior surface में जो दो फोसा हमने लास्ट टाइम बताया था, these are two fossa. On posterior side there is one fossa called olecranon fossa, but in anterior side there are two fossas. Basically depression. One depression this side where medial epicondyle side where ulna bone articulate, and one fossa is on radial side. So this fossa is called coronoid fossa. Coronoid fossa. Then, and this fossa, this present on the radial side. This is coronoid fossa, and this is radial fossa. Then, now one more thing on the posterior side. There is a shallow groove present on the posterior side. This is marked. Here. This shallow groove is called radial groove or spiral groove. Radial groove and or spiral groove. There is a nerve passing in this groove. We discuss it. Spiral groove. Done. So this is humerus. Now we start the first. पहले we start from the radius से start कर लेते हैं पहले चलिए. Done. First we start from the radius bone. यहाँ से start करते हैं चलिए. So we starting from the radius bone. These are forehand bone. This fourth bone our radius bone. So first we discuss it parts. सबसे पहले it is also a long bone. So we draw a long bone. It is like it has some important markings. First, on the top, there is a disc-like thing present on the top of the radius. This is disc-like. Then it descends down. This radius is short from the upper side, but it is very thick on the lower side. And now it is thick. First, we take medial and lateral side. Let's say this is lateral side. This is lateral and this is medial. Done. So, and distally it extends and form like this. This is end, and it helps in formation of wrist joint. Done. This is called, this is a marking present here like this. It is like this. This point tip is called, it is extended like tip. It is called styloid process. Styloid process of radius, because similar process also present in ulna of radius, remember. Then, and here there is a neck also present. It is like this. First, this is disc. This is neck.
there is a one more thing present here, like this, laterally. Very faint thing. Done. This thing is called, there is a prominence coming out like bulge like. It is called radial tuberosity. Radial tuberosity. Done. These are the things. And remember, which is present in anterior and which is present in posterior. It is present in anterior surface or anterior surface. It is anteriorly present. Anteriorly, this present in posteriorly. Posteriorly. Then means this side. This is posterior side. This is anterior side on anatomical position. So this is on posterior side. Posteriorly. Then on posterior side. On posterior side, there is a faint line. Some faint lines also present. Faint line. This anterior side, so we draw things on posterior side. There is a faint line present. Many lines, not only single line. But one is deep, some are narrow. Faint line just like projection away. And tubercle like projection. Okay. This called, here is a tubercle form on dorsal side. Called dorsal tubercle or Lister's tubercle. Dorsal tubercle of Lister's बोला जाता है इसे. Full name Lister's dorsal tubercle of Lister या फिर Lister's tubercle और Lister's tubercle. Lister's tubercle. Done. So now we discuss their surfaces and borders. So we draw a superior view to draw their surfaces and borders. Let's say it is a triangular. If we cut the shaft, we saw it is a triangular. So first we draw superior view. Superior view. When we cut its shaft. So it is like this. Then there is a lateral side and there is medial side. Because when we put our hand in anatomical position, the radius is present in the lateral side. So this lateral side outside and one is in inner side, body, medial side, where it form a joint with the ulna bone. Then syndesmosis type का. Syndesmosis हमने पढ़ा था ना, fibrous joint में, introitious membrane present like this. Let's say this is the radius. We draw how it forms the syndesmosis. Let's say this is the ulna bone. Ulna bone is also somewhat triangular, cutting. This is ulna. इसको अलग लिखने पहले. तो पहले इनके लिख लेते हैं surfaces and borders. This is ulna. Ulna लिख देते हैं. And this is radius. Then there is a membrane, fibrous membrane present between them, which is called introitious membrane, which help in formation of joint. Then let's say this is anterior side. Anterior side ऐसे हमारा हैंड रखा है, तो this is anterior and this side is posterior. ऐसे सीधे खड़े तो this is anterior and this is posterior. Then so first we draw. This is medial because ulna present in medial side, little finger side. This is ulna bone present here, medial side, and this is lateral side, and this is lateral. Then
चलिए इनको फिक्स करते हैं, पहले हम साइड्स फिक्स कर रहे हैं इसकी। तो ये पार्ट्स है हमारे। तो पहले हम इसके सरफेस देखते हैं। देयर आर 3 सरफेसेस एंड 3 बॉर्डर्स। देन पहले हम बॉर्डर्स की नेमिंग कर लेते हैं। बॉर्डर्स की नेमिंग हम ब्लू से कर रहे हैं। ब्लू आर बॉर्डर्स। सो फर्स्ट इज प्रेजेंट इज द एंटीरियर बॉर्डर। ऑब्वियसली बात है एंटीरियर बॉर्डर प्रेजेंट होगा। दिस इज we draw border as a point because it is a superior border. Draw border तो एक longitudinally present होगा ना, border present is longitudinally, but we draw from the superior, so it is present like a point size, but it extends longitudinally. This is anterior border. Anterior border. And one here is, this is posterior border. And one this called medial border or interosseous border, because this membrane is called interosseous membrane, so this border is called interosseous border. Interosseous border or medial border, because present medially. Medial border. Then and this membrane is called interosseous membrane. Interosseous membrane. Then now there are 3 surfaces. These are 3 borders, 1, 2 and 3. Now there are 3 surfaces. So surfaces are these. First is anterior surface, which is present on anteriorly. It is also called anteromedial, because somewhat it's facing towards medial side, but we say normally anterior. Then one this surface anterior, this is lateral surface which is facing laterally, and one is posterior surface which is facing posteriorly. So first नेमिंग कर लेते हैं, इधर कर, ठीक है. This is anterior surface. Surfaces are from red and borders are from blue. Then this is lateral surface. And this is posterior surface. Posterior border and posterior surface. Surface. Done. So these are the radius, borders and surfaces. 3 are borders and 3 are surfaces. Red marking कर देते हैं. Red से. These are 3 surfaces. And these 3 are borders. Then attachment all muscle attachment we discuss combinedly from all bones starting. First we take orientation of bone. Then these are the markings. अब देख लेते हैं दिखती कैसी है बोन कुछ कुछ. देखिए, this is radius bone. Radius bone. This is whole is radius. It is from the anterior side. This is anterior side of the radius bone, and this is the posterior side. Ignore all other bones. एक मिनट zoom कर लेते हैं हम थोड़ा.
define this is done. This whole is the radius bone, ये वाली. So इसमें मार्किंग कर लेते हैं सबसे पहले. This is head. से करेंगे. This is head. Here, this is radial tuberosity. Tuberosity. This is from anterior side radius bone hole. Then now this is styloid process. Styloid process. Done. And this is a borders mark करते हैं. This is a very sharp border. Remember, जो introsseous border होता है is very sharp, but not all borders are sharp. This is very sharp border. This is ये वाला जो border है, ये वाला. It is called introsseous border. Introsseous border. Done. And this is this marking. ये जो anterior side पे है. It is called इस तरह से होता है. It is called anterior border. And this is on posterior side, faint line. ये वाली. Somewhat facing posteriorly. It is called posterior border. अब faces. This is first we take this is anterior surface. Remember. अब देखिए anterior surface किस किस border के बीच में प्रेजेंट है. सबसे ऊपर चलते हैं. Anterior surface किस किस border के बीच में प्रेजेंट है. It is present in the introsseous border and the anterior border. Anterior and introsseous border के बीच में जो होगा, it is called anterior surface. So this surface, it is called anterior surface. This whole. यहाँ पर देते हैं. Surface पीछे लेकर थोड़ा. This is anterior surface. Done. And now lateral surface. Lateral surface किसके border के बीच में present होगा? देख सकते हैं. Lateral surface present in anterior border and the posterior border. So this is lateral surface. So this anterior border and this is the posterior border. So this is lateral surface. ये वाला. This is posterior border. Posterior surface. So lateral. This is lateral. Anterior and posterior के बीच में तो lateral. This is lateral surface. And not we cannot see it posteriorly from this side. Now this is the posterior side and other marking कर लेते हैं. This is neck of the radius. Neck. Then now come to the posterior side. This is the posterior side of the radius. This is. Ignore all other bones. This is posterior side. Done. So posterior side we can see this tubercle is called dorsal tubercle of Lister's. Dorsal tubercle या फिर Lister's tubercle. Dorsal tubercle of Lister's.
Done. So these are the radius marking. अब there are many fractures of the radius. क्लिनिकल में चलते हैं उसके. These are the radius marking. क्लिनिकल क्या होगा इसका? क्लिनिकल में इसमें आते हैं फ्रैक्चर्स. क्लिनिकल fractures. Then, so we have two types of fractures. One is Colles fracture and other is Smith fracture. Then अब देखते हैं what is Colles and what is Smith. So this is called, first part is called, it is called olecranon process. Olecranon process. Olecranon process is like this. This is this is olecranon process. Upper part. It also has surfaces. Superior surface, inferior surface, medial and lateral surface. Then medial lateral border. Similarly, border बोल सकते हैं उन्हें. So it also has surfaces. This is superior surface. मार्क कर लेते हैं. Superior surface, inferior surface. This is side inferior surface. ये जो होगा inferior surface हो. This is inferior surface. इस मार्क कर लेते हैं inferior surface. Surface. Done. And this is called, ये जो पतला सा, it is called medial and lateral border. We can say medial side of the medial border, medial border. This is not much important, and this is lateral. ये प्रैक्टिकल में पूछ जाती हैं चीजें. Lateral border. Then next, ये जो notch जैसा है, it is called trochlear notch. This notch is called trochlear notch. ये जो हमारा this notch is called trochlear notch. Done. And the next is this base like, ये जो हमारा this surface, ये जो base like, इसको बोलते हैं coronoid process. A coronoid process, ये it fix into the coronoid fossa of the humerus. Coronoid process and coronoid fossa. Remember, this is fixed in this fossa like this. In humerus में fossa था ना, remember? Humerus में ये जो fossa था, जो अल्ना है वो इसमें फिट हो जाती है, जिस वजह से यहीं पे हाथ हमारा रुक जाता है आगे, तो यहाँ पे अल्ना फिक्स हो जाती है. ये अल्ना के लिए होता है coronoid fossa for coronoid process of ulna. Done. Ulna bone इधर था, ये
ठीक है. These are the parts of upper bone. Now cornoid process also have surface and this is upper surface, superior surface we can say. This called superior surface of cornoid process. Superior surface. And one important thing in cornoid process, there is no inferior surface. It is called anterior surface because it's facing more anteriorly. It is called anterior surface. Done. And one same thing, medial and lateral border. So these are the parts of the coronoid process. And borders also. 1 and 2. Medial border and lateral border. Because these are the like flat things. शीट जैसी तो इनके सुपीरियर सरफेस inferior surface मोस्टली प्रेजेंट है एंड बॉर्डर्स लाइक कॉर्नर्स लाइक बॉर्डर जिनके फ्लैट थिंग्स है तो इसलिए हम उनके नाम देंगे इस तरह से. डन. तो ये सारी कॉर्नर प्रोसेस की चीजें. अब नेक्स्ट शाफ्ट. इट ऑल्सो हैज tuberosity 1. It also has one tuberosity. This tuberosity, it is present on the ulna, so it is called ulnar tuberosity. Ulnar tuberosity. Done. And this is called styloid process. Styloid process. Done. ये तो इसकी मार्किंग. अब इसके अगर ड्रॉ करें बॉर्डर्स एंड सरफेस, दीज आर लाइक अल्ना. हमने रेडियस में ड्रॉ किया था डायग्राम, सिमिलर डायग्राम बनेगा बट इस बार हमारा व्यू अलग होगा. फर्स्ट टाइम हमने अल्ना रेडियस के सरफेस देखा था, अब हम अल्ना के साइड से देखेंगे. तो अल्ना की साइड से अगर हम बनाएंगे इसे तो ऐसे ही बनेगा सरफेस एंड बॉर्डर्स के लिए. नाउ अगेन वी ड्रॉ. This is from ulna side now. This is radius. Ulna radius. Introitious membrane. दोनों के बीच में. Done. Borders and surfaces. 1, 2 and 3. Similar. But one thing, एक चीज अलग है. Introitious borders का जो radius, the introitious border of radius is medial border. But in ulna it is lateral border because it facing radial. This anterior border. This posterior border. And this is lateral border. Lateral border and introitious border. In radius it is medial, but here it is introitious. Lateral side. Introitious. जो introitious membrane से attach है. Border. Done. Next, surfaces. Again surface को हम red से draw करें. This is anterior surface. Anterior surface. This is lateral surface. And this is posterior surface.
posterior surface. So 3 borders and 3 surfaces, similar like radius. So this is markings of ulna. तो यहाँ पे हम लिखते हैं ulna का डायग्राम. Wait 2 minutes. यहाँ पे लगा एक मिनट जस्ट. ये तो ये है ulna का डायग्राम. This is ulna bone. This is ulna. Ignore the radius. It has also some parts. First, this is oligrin process, trochlear notch, cornoid process. मार्किंग करके चलते हैं. First is anterior side पे. Oligrinal process, trochlear notch, and this is cornoid process. Cornoid process. साफ डायग्राम. यहाँ पे डायग्राम जैसा साफ था. ये वाला डायग्राम लिखना चाहिए. अब tuberosity. There is a tuberosity present this side here. इसमें मार्क कर लेते हैं tuberosity. एक मिनट ये वाला डायग्राम लिखते हैं. Just 1 minute. ये वाला डायग्राम लिखते हैं. ये देखिए इस वाला डायग्राम मार्क करते हैं. दिस इज पार्ट्स ऑफ ulna bone. This trochlear oligrin process this trochlear notch and this is cornoid process. This cornoid process and then this is it broken away. This is called ulnar tuberosity. Ulnar tuberosity. Then here the pointed, this thing is called styloid process. Process of ulna. Ulna. Done. And the next is borders. It also has borders and surfaces. So here we can say this side is lateral for the ulna and here have sharp borders. So first
This is border 1. Remember, there is a faint border. It is called anterior border. Here we can write this anterior border. Border blue से लेते हैं. This is anterior border. Anterior border. There is a very sharp border. Sharp border. How we can determine this side later and this side later? Remember, तो जो हमारी स्टाइलेड क्रॉस होती है ना, it facing medially. Done. So introitious border in ulna is present in the lateral side. So this facing lateral medially, it facing this side na. So this is medial side and this is lateral side. So this is sharp border is called introitious border. ये हमें छोटे बदल जाता है बोलना है. We can easily determine introitious border. सबसे पहले डिटरमाइन द वेरी शार्प होता है बॉर्डर. दोनों बोन वेरी शार्प हो गई. वेरी शार्प. ऐसा नहीं हो वेरी शार्प हम एकदम पहचान लेंगे सही, इतना बदल जाते हैं और बॉर्डर के कंपैरिजन में. डन. एंड नाउ सरफेसेस. तो एंटीरियर बॉर्डर, anterior border is like this. Wait, this anterior, this is posterior border. Sorry, here we can see posterior border is also continue posterior side. This posterior, because anterior is like this. यहाँ से continue हो रहा है anterior, ये वाला anterior. This posterior. This posterior, and this is anterior, because anterior border start from the tuberosity. Remember one thing, always it start from the tuberosity and come like this. This anterior border. मार्क कर लेते हैं anterior border. नेक्स्ट सरफेस मार्क करते हैं. चलिए, तो एंटीरियर बॉर्डर एंड इंट्रोशियर सरफेस. बॉर्डर के बीच में कौन सरफेस आएगा? ऑब्वियसली एंटीरियर सरफेस. दिस इज एंटीरियर सरफेस. वही डायग्राम पे चलते हैं फिर से, तुमने भी बनाया था, इससे क्लियरिटी बनेगी. देखिए, ये था हमारे पास, ये रहा हमारे पास इंट्रोशियस बॉर्डर एंड एंटीरियर बॉर्डर के बीच में कौन सा है? एंटीरियर सरफेस. पोस्टीरियर एंटीरियर के बीच में लेटरल एंड इंट्रोशियस पोस्टीरियर के बीच में पोस्टीरियर सरफेस. तो हिसाब से मार्किंग करते हैं. डन. तो ये हमारा किसके बीच में? इट इज प्रेजेंट बिटवीन एंटीरियर बॉर्डर and the introitious border, so it is called anterior surface. Anterior surface. Next is this anterior border and the posterior border. So this surface is called lateral and also it facing laterally. एंटीरियर सरफेस हो गया ना. एंटीरियर पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में चल रही है ना. मैंने कौन सा मार्क कर दिया, देख लेते हैं एक बार. अरे एक चीज चेंज कर ली सर यहाँ पे. दिस नॉट लेटरल, दिस इज मीडियल. बिकॉज मीडियल होगा ना अल्लाह में, तो रिमेंबर वन थिंग, दिस इज मीडियल बॉर्डर. Medial, because this side is body side, so this medial border, medial surface. Anterior थी ये साइड तो हमारी रेडियस में, इट फेसिंग लेटरली. दिस इज लेटरल, but here it is medial, so here is medial surface. This is lateral side and this medial side, so this is medial surface. यहाँ पे medial surface मार्क करें. This is medial surface.
मीडियल सरफेस, बिकॉज बॉडी साइड आ रही है ना, डन। तो ये हमारी मार्किंग्स हो गई रेडियस की। अब पोस्टीरियर साइड पे तो हम एकदम फ्रंट से नहीं दिखता, वो हम इस साइड पे दिखते हैं। ये जो होगा ना हमारा, ये पोस्टीरियर बॉर्डर है, डन। एंड वी कैन से दिस द इंट्रोशियस बॉर्डर। इंट्रोशियस एंड पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में हमें मिलेगा पोस्टीरियर सरफेस। दिस इज पोस्टीरियर सरफेस। ये हो गया हमारा पोस्टीरियर सरफेस। कैसे देखते हैं पोस्टीरियर सरफेस? हाउ इट इज पोस्टीरियर सरफेस? बिकॉज this is posterior border, this is posterior border, this is posterior border, done. And this is intraosseous border. This is intraosseous border, done. Posterior border, and this is intraosseous border. Done. So these are the two things. Surface complete हो गया, borders complete हो गया. Remember, all these things are important. तो ये हमारी अल्ना बोन कंप्लीट हुई. नेक्स्ट चलते हैं अब हम रिस्ट बोन्स पे. These are the long bones of upper limb. Humerus, radius, ulna. Done. Next, we start from the wrist bones. तो हमारे पास रिस्ट बोन्स भी कई सारी हैं. पहले स्टार्ट करते हैं रिस्ट बोन्स. Then next we start from the wrist bones. Wrist bones में हम इंक्लूड करते हैं कार्पल बोन्स. Here we study the carpal bones. So carpal bones में बहुत ज्यादा स्टडी करना है. Just similar, very small things. Carpal bones. Names and some their positions. So कितनी होती हैं? 8 in number. 8 each hand. 8 in each limb. In each limb. Done. So first we draw. पहले ड्रॉ कर लेते हैं कैसी पोजीशंस होती है, क्या क्या नेम होते हैं. So first, let's say this is one bone, this is radius bone, done. And here is ulna bone. ulna bone का यहाँ कोई कंट्रीब्यूशन ऐसा होता नहीं है, done. तो यहाँ पे हमारी 8 बोन्स प्रेजेंट होंगी. दिस रेडियस एंड अल्ना. तो यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं हम. सबसे पहले दे आर प्रेजेंट इन द 4 पेयर्स. वन इज टुवर्ड्स रेडियस साइड, रेडियस अल्ना साइड, एंड वन इज टुवर्ड्स मेटाकार्पल साइड. तो फर्स्ट ड्रॉ करते हैं लेटरल साइड. दिस लेटरल साइड, थंब साइड, lateral side, and this is medial side, little finger side. Done. So first पहले हम draw करें कौन से bone से. First bone is our this side. One. Here is two. Then we have three, and one we have four. चलिए पहले हम सिंपल वे में ड्रॉ कर लेते हैं. सबसे पहले समझ लेते हैं कौन से bone, उसके बाद अरेंज कर लेंगे. चलिए पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं डायग्राम कैसे होता है, 4 बोन्स कैसे होती हैं. सिंपल में पहले देखते हैं.
सबसे पहले दिस रेडियस बोन, पहले हम नॉर्मली इमेजिनरी डायग्राम ड्रॉ करें, एंड दिस इज अल्ना बोन। तो हमारे पास कितनी बोन्स होंगी? चार होंगी, चार चार के पेयर में। सबसे पहले हमारे पास 1, 2, 3 and 4. These are 4 bones. Just we are drawing diagram. And 1, 2, 3 and 4. These are 4 bones of our calf, wrist. तो पहले हम नेम कर लेते हैं. दिस इज रेडियस बोन, पहले रेडियस है, तो हम थंब साइड की बात कर रहे हैं पहले, रेडियस एंड अल्ना. दिस इज थंब साइड. डन. एंड दिस इज लिटिल फिंगर साइड. सबसे पहले जो हमारी बोन्स आती है डायग्राम पहले, एक इंपॉर्टेंट डायग्राम रहेगा हमारा, इसको हमने यहाँ बना देते हैं. ये हमारा डायग्राम डन. तो देखिए ये हमारी बोन्स है. सबसे पहले जो बोन आती है हमारी थंब साइड पे, इट इज कॉल्ड स्केफॉइड. 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, स्केफॉइड. देन सेकंड बोन is called lunate. Third bone is called triquetral. And the fourth bone is called pisiform. Fifth bone from this side is called trapezium. Then it is called trapezoid. Seventh bone is called capitate. It is largest bone. And the eighth is called hamate bone. पहले तो हमारी लेयर्स वाइज प्रेजेंट है. 1 नंबर से शुरू करते हैं. 1, 2, 3, 4. 5th, 6th, 7th, 8th. डन. तो ये हमारी बोन्स होती है. सबसे पहले कैसे होती है, अब इन्हें देखते हैं हम हाथ में अरेंज कैसे होती है. सबसे पहले हम नाम देखते हैं. डन. अब देखते हैं अरेंज कैसे होती है. इनकी एक्चुअल शेप देखते हैं. अब एक्चुअली सर्कल तो नहीं होंगे ना एग्जैक्ट, तो इनकी शेप. दिस बोन इज कॉल्ड स्कैफोइड. देन वन इज slightly small, it is called lunate. Then another bone, and above this is not like as such. Then above there is a small bone. अब पेसिफॉर्म बोन्स जो होते हैं ना वो पी शेप की होती है, मतलब पी लाइक मटर. ये ट्राइकोटल बोन के ऊपर ही होती है एज सच. ये हमारी ये सारी ये पिसिफॉर्म बोन है. चलिए ड्रॉ करेंगे. एंड नेक्स्ट हियर इज
one bigger capitate. Here this side is trapezium, then trapezoid, and here is hamate. तो ये हमारी बोन्स होती हैं. अब इनका नेम कर लेते हैं. दिस इज स्कैफॉइड, lunate, this is triquetral. अब ट्राइकोट्रल ऊपर ही होती है पिसिफॉर्म बोन. पिसिफॉर्म, तो ये तो फर्स्ट लेयर की बात हो गई. दिस इज ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, दिस इज लार्जेस्ट बोन कैपिटेट, लार्जेस्ट कार्पल बोन, लार्जेस्ट लिख लेते हैं. डन. एंड दिस इज कॉल्ड hamate. डन. तो ये हमारी बोन्स हो गई. अब जो स्केफेड बोन है ना, ये जो निकल रहा है, दिस इज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्यूबरकल ऑफ स्केफेड. इट इज कॉल्ड, कहीं से लिख लेते हैं, ट्यूबरकल ऑफ स्केफेड. डन. Then pisiform is like P-shaped. P-shaped. इस shape ऐसी होती है. There is a ridge present in the trapezium like this. This ridge is called trapezoid, ridge of trapezium. It is ridge of trapezium. Done. So ये marking. Scaphoid bone has shape, boat shaped. It has boat shape. Done. It is boat shape. Next, one important point: which bone is first ossifier and one which is late ossifier. So first formed bone is first bone ossifier is capitate. Capitate. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा capitate. Capitate. And the last bone ossifier is pisiform, P-shaped. Pisiform is also the bone which develop inside tendon. Sesamoid type of bone. Remember example हमने लिखा होगा. Pisiform bone is sesamoid bone. It is also a sesamoid bone. Sesamoid bone example में.
ये तो बात रही। अब चल रहे हैं फ्रैक्चर ऑफ क्लिनिकल में। क्लिनिकल में इट इज फ्रैक्चर ऑफ स्केफॉइड। फ्रैक्चर ऑफ स्केफॉइड। तो अब देखिए स्केफॉइड की में ब्लड फ्रैक्चर एक बोल देते हैं एवेस्कुलराइजेशन, बेसिकली नेक्रोसिस। फ्रैक्चर में बोलते हैं फ्रैक्चर एंड एवेस्कुलराइजेशन। यहाँ पे मींस ब्लड सप्लाई लॉस हो जाती है इसकी। एवेस्कुलराइजेशन, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, basically death of bone. It is called death of bone, lead to death of bone, means वो टिश्यू डेड हो जाएगा, वो एरिया बोन का, which is called necrosis. It is called necrosis. डन। तो अब देखिए होगा क्या। अब नॉर्मल केस देखते हैं, फिर दूसरा केस देखें। तो देखिए सबसे पहले नॉर्मल बोन कैसी होती है। किसी किसी केस में होता है वेस्कुलराइजेशन, हर एक में है। फ्रैक्चर तो हो सकता है किसी भी केस में, बट ए वेस्कुलराइजेशन और नेक्रोसिस सम केस में देखने को मिलते हैं, नॉट प्रेजेंट कॉमनली। लेट्स से दिस इज स्केफॉइड बोन। देन it has proximal part, proximal end means जो पास हो towards radius, and towards radius and is distal end, जो मेटाकार्पल की तरफ होगा, distal end। लेते हैं पॉइंट भी, towards radius, towards metacarpel। देन अब देखिए it has two nutrient foramen. Nutrient foramen is a canal in through which any blood vessel enter. So first it has two nutrient foramen like this, from which blood vessel enter. Proximal end and one is distal end. Then so normally अगर यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ भी, if fracture occurs, so what happen? फ्रैक्चर के बाद क्या होगा, ये डिवाइड जाएगी टू पार्ट्स में बोन, but there is nothing happen, no avascularization or necrosis occur, because due to two nutrient foramen blood supply remain unaffected. That this is normal. No avascularization occur. Next is if sometimes there is only one end present in the bone, all arteries enter through the one part. So if any fracture occur, there is necrosis occur. Let's say it is like this. Sometimes what happen? Let's say this is bone. Okay, but this time only one
nutrient foramen present and which is called distal foramen. Sometimes only one foramen present. So what happened? Only both arteries enter from the similar foramen. One artery is like this and another artery go from this and supply this part. Again this proximal and this distal. Only distal foramen present. Proximal end and distal end. So end. This is occasionally. Now if this time fracture occurs, so what happened? Fracture. This time if fracture occurs, there is loss of proximal part because ब्लड सप्लाई पूरी रुक जाएगी कंप्लीटली. यहाँ तक आएगी नहीं इस बार, यहाँ तक आ ही नहीं पाई. ये तो यहाँ तो ठीक है सप्लाई. दिस पार्ट डाई here proximal part. Avascularization of proximal scaphoid occur. Then it is occasionally, this is occasionally. But this is commonly. फ्रैक्चर तो पॉसिबल है बट जरूरी नहीं कि ओके ये एवास्कुलराइजेशन हो. कॉमन. सो कॉमनली वी आर सेफ. डन. So this is fracture. Now come to the last part, carpal and metacarpal. इसमें हमें ज्यादा नहीं पढ़ना, नेम से याद रखना, मतलब कितनी होती है उस नंबर से याद रखना बहुत इतना. तो इसको देख लेते हैं एक बार कैसे ऐसा अरेंजमेंट होता है हैंड में. बस हैंड पिक्चर ये देखिए, ये हमारे पास बोन्स होती है. सबसे पहले इसको जूम कर ले थोड़ा सा. देखिए सबसे पहले बोन्स देखते हैं. सबसे पहले जो ये जो बोन दिखाई दे रहा है ना, इट इज कॉल्ड स्केफॉइड. देन हियर इज lunate. This is lunate ऊपर की तरफ. This is scaphoid, this is lunate. Then triquetral and here is pisiform bone. Next is trapezium, trapezoid, capitate and hamate. Then it is hamate. Pisiform bone is this. So yeah, these are the bones. हम लिख लेते हैं. Scaphoid, actually scaphoid, pisiform bone, pisiform, trapezium, then capitate. पहले कैपिटेट कर लेते हैं. इसके बाद ट्रेपेजॉइड, देन ये जिसके ऊपर अटैच है इट इज कॉल्ड स्केफोइड. लूनेट और ये जिसके पीछे की तरफ है ये हो गए ट्राइक्वेट्रल. देन कौन सी बच गई लास्ट? हैमेट. तो इधर की तरफ ये हो जाएगी हैमेट. डन. तो ये होती है बोन्स. उसके बाद 5 हमारी मेटाकार्पल्स होती है एंड 14 फेलेंजेस होती है. इसका बस हमें नंबर याद रखना है, नॉट मच डिटेल. डन. बाकी मेटाकार्पल्स के बारे में ये हमें पता ही है. इनके पे क्या होता है, ये किसका एग्जांपल होता है? एपिफाइस वगैरह एग्जांपल में आ जाता है. तो देख लेते हैं इसको.
ठीक, यहाँ देख लेते हैं। नेक्स्ट आर मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स की इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि डॉर्सल साइड में ये एक प्रोमिनेंस बनाते हैं विच इज कॉल्ड नकल्स। ये जो होती है ना हमारी, these are called knuckles which is formed by metacarpals. Okay, like this. डॉर्सल साइड में थोड़ी सी फूली होती हैं। अब तुम देख लेता हूँ यहाँ पे डायग्राम देख, दे फॉर्म knuckles of head on dorsal side, dorsal surface। ठीक है, देख लेते हैं कैसे, कितनी होती है टोटल, 5 इन नंबर, 5 इन नंबर, in which thumb metacarpal is small, very small, thumb metacarpal is smallest, इजिली डिस्क्रिमिनेट हो जाती है बाकियों से। देख लेते हैं इसको। हैंड पे देखते हैं, एक मिनट, आ गया, ये रहा हैंड। ये देखिए, दिस इज थंब, here we see it from the ventral side. How we discriminated from this ventral from this radius bone, there is no lister's tubercle present, so we can discriminate it is a ventral side of hand. Done. These are the 5 metacarpals. On dorsal side it forms a prominence which form the knuckles। Done. तो ये तो हो गई हमारी इसकी। अब लॉन्गेस्ट वाली मेटाकार्पल कौन सी होगी यहाँ पे, लॉन्गेस्ट वाली मेटाकार्पल, इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट वाली बिकॉज मिडिल फिंगर की सबसे लॉन्गेस्ट होती है, बट लॉन्गेस्ट वाली मेटाकार्पल हो गई। अब नकल से लिखिए, ठीक है, तो इसमें हमें इतनी चीजें आती है बस। देन उसके बाद कार्पल्स, और इसका याद दो हमें क्या क्या चीजें होती है इसमें, बेस पार्ट्स में याद रखेंगे तो बेस, शाफ्ट एंड हेड। बाकी हमें इसका एग्जांपल पता ही है, उसके अंदर आती है एब्रेंट एपिफाइसिस, एब्रेंट के अंदर आती है, एब्रेंट के अंदर, ठीक है। जो चार मेटाफाइस, चार की कहां पे होती है, टिप पे, और एक की होती है, चार की तो होती है टिप पे, और एक की थंब वाली होती है बेस पे, वो होती है नॉर्मल। अब उससे डिफरेंट मिलता है तो हम उसको बोलते हैं एटाविस्टिक, सॉरी एटाविस्टिक कह रहा हूं, एब्रेंट। देन एटाविस्टिक कौन सी थी हमारी, कोरोपॉइड प्रोसेस वाली, याद रखेंगे। बाकी प्रेशर और ट्रैक्शन, प्रेशर वाली नॉर्मल जॉइंट्स की तरफ होती थी, जॉइंट्स के जो हेड, जॉइंट्स के जो हेड वगैरह होते थे, और बाकी ट्रैक्शन वाली ट्यूबरकल्स। देन तो यहाँ पे पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट इज कार्पल्स, फेलिंजेस, फेलिंजेस में सिमिलर पार्ट्स है, 14 होती है, बाकी ज्यादा नहीं आ ना, 14 इन नंबर। And it also has base, it is like chest pawn, like this base। अब चेस्ट में प्यादा नहीं था जैसे, like this, ये होती है हमारी phalange, base, shaft
एंड हेड, ठीक है. इट इज लाइक चेस्ट बोन. ईच फिंगर में 3 होती है एक्सेप्ट थंब. थंब में 2 होती है, तो टोटल 14 हो जाती है. तो ये हमारी अपर लिम्ब की होल बोन्स कंप्लीट होती है. अब नेक्स्ट टाइम से वी डिस्कस अटैचमेंट्स ऑफ बोन, मसल्स अटैचमेंट बेसिकली. डन. थैंक यू.